शी इज गेटिंग वेब सीरीज इन लीड रोल्स. डू यू थिंक देयर इज अ चेंज? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अभी जमाना ऐसा है जहाँ पे बदलाव है? यार मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कोई 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 जिंक्स नहीं है और नोबडी ब्रेकिंग थ्रू एनीथिंग. हम यहाँ बॉम्बे में काम करने आते हैं, यू नो, खाली पेट खाली जेब. सो जब पहला जो मुद्दा है लाइफ में हमारा होता है कि हम रेंट दे सकें. ऑफ कोर्स हमारे अंदर साहस होता है, वी हैव दिस हंगर, ये जज्बा होता है कि हमने आर्ट में आना है. लोग बोलते रहते हैं, मुझे भी लोग बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना कि टाइप कास्ट हो जाओगे. तो मैं कहता हूँ पहले कास्ट तो हो जाओ, पहले कास्ट हो जाओ, फिर टाइप कास्ट का बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट आई थिंक प्रायोरिटी, मैं आप, आई एम ऑल्सो फ्रॉम वेयर यू आर, वी आर ऑल इन द सेम बोट. We all come to Bombay, to the movie industry, to find our voice. I think we come here to find our freedom, you know, through art. So I just feel यार काम करो जहाँ काम मिले. आप काम कैसे करते हो उस पर ध्यान दो, you know. So that is more important. How you work, how you create, how you become as a human being. आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को कैसे अपनाते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं. बाकी यू नो अगर आप सही होंगे, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, आप यू नो यूल गिव अ गुड परफॉर्मेंस. आपकी जो भी फॉर्म ऑफ आर्ट होगी आप अच्छा काम करोगे और कनेक्ट कर पाओगे. सो अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ख़त्म कर देते हैं आज के बाद. नहीं, अभी तो शुरू किया है, बिकॉज आपके आपके आंसर से मुझे बहुत सारे सवाल आए. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने शहर को छोड़ के, जैसे आपने कहा कि खाली जेब खाली पेट आए हैं. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, आई केम फ्रॉम कैलकटा, फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. तो मेरे पास कैलकटा में प्रिविलेज था जहाँ पे मुझे हर दिन सोचना नहीं पड़ता था कि मुझे क्या खाना है या खाने को मिलेगा कि नहीं. Yesterday somebody called it a struggle, so I was just telling them that it's not a struggle, believe me. मतलब working for your dream is not a struggle, you're at it, it's a journey. but मुझे जानना है कि जब आपने शुरू किया था तब माहौल भी अलग था. how difficult were the days? and एक ह्यूमन बीइंग के लिए ना कभी कभी वो सेल्फ डाउट वाला मोमेंट आ ही जाता है, स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट. even the best of best have those moments of self doubt, right? how did you deal with it then when you didn't have work? I think I dealt with it the way I deal with it now. Same. This will never stop, wherever you go, whatever you do in life. और I also feel like आप कह रहे हैं struggle, of course struggle होती है कभी कभी जब आप 3 दिन खाना नहीं खा पाते हो. स्ट्रगल होती है जब माँ बाप फ़ोन कर रहे हो और दुनिया आसपास बोल रही है कि यार तुम लाइफ वेस्ट कर रहे हो. स्ट्रगल होती है कि मैं 3-3 घंटे जिम करता था, 4-4 घंटे जिम करता था. तो मेरे दोस्त बोलते थे यार एथलीट ही बन जाता. मेरे को यार अगर मैं जिम नहीं करूँगा तो मैं शायद किसी को मार दूंगा या मैं घर की दीवारें तोड़ दूंगा. सो आई अंडरस्टैंड, यू नो, आई मीन, सो इट्स अ चॉइस that we have made, that we will come and we will follow the voice inside us. And yes, it is not easy. मैं यहाँ बैठ के victim नहीं बनूंगा because I chose to be here. मुझे किसी ने धक्का मार के नहीं भेजा बॉम्बे. You know, yes, it is tough. And would we be here if it was easy? Would it be art if it was easy? You know, सबकी लाइफ अलग है, सबका रास्ता अलग होगा. But मुझे, if you ask me to look back, I just feel the most important thing, मुझे ना चीज़ों को घुमाना अच्छा लगता है. दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिविटी, आप क्या देख रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो. So I would say rather than talking about struggle, we should talk about what we should do, how we should be, what we should, you know, what we should see, how we should be with each other. Because आगे का रास्ता वही है. स्ट्रगल के बारे में बात करके फजूल है यार. You know, मैं स्ट्रगल की बात नहीं करता. विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज मैंने कल भी यही बोला था कि एक्चुअली अगर हम अपने आप को ही छोटा कर लेंगे ना तो दुनिया ऐसी ही बैठी है कि आप
फिसलो तो वो आपको ज़्यादा खींचे। तो अगर बट आपने दुनिया ऐसी भी है, सॉरी मैंने अगर आपकी बात काटी, बट दुनिया ऐसी भी है जहाँ फिसलो आपको संभालती है और ऊपर True. लेके आती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सो दुनिया में दो तरीके के लोग होते इसलिए हैं। मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं बात को घुमाऊंगा, हम उन लोगों की बात करते हैं जो आपको फिसलने से बचाते हैं और उठाते हैं, बट आपको उसके लायक भी बनना होगा, आपको वो दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ यार, ऑफ कोर्स हम लोग काम करते हैं, सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, लाइटिंग, सो मेनी, इन डांसिंग। मैं जब स्टार्टिंग में आया था मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था आर्ट के बारे में, मैं तो ऐसी जिद में आ गया था। बट मुझे एक चीज़ अभी याद रहती है कि आई वॉज अ गुड गाय यार, मैं अच्छा इंसान था। जहाँ जाता था लोग खुश होते थे कि यार ये अच्छा है, इसको मौका दो। सो शुरुआत जो होती है ना, तो मैं अगर आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जो स्ट्रगल जो शब्द है, अगर ऑफ कोर्स इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, आई कांट चेंज दैट वर्ड, बी पॉजिटिव, यू नो, बी अ नाइस पर्सन। कई बार काम इसीलिए मिल जाता है क्योंकि लोग आपको अच्छा लगता है, लोगों को लगता है यार इसकी एनर्जी अच्छी है, यू नो, ये प्यारा इंसान है, ये कंप्लेंट नहीं कर रहा, ये रो नहीं रहा, ये परेशान नहीं कर रहा, यू नो। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे को स्टार्टिंग में लोगों ने शायद इसलिए काम दिया बिकॉज आई वॉज अ गुड गाय, यू नो, आई मीन आई वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। आई रिमेंबर जब टीवी के बाद कुछ वक्त मेरे पास फिल्में नहीं थी, एंड आई मेट अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, एंड आई वॉज लाइक दिस. Of course, there was a lot of pain and anger and angst and every possible thing was inside. And he said, क्या चल रहा है यार? मैंने कहा सर कुछ नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, काम मिल जाएगा। He said, "पर तेरी शक्ल में तो ऐसा ग्लो है, ये तो 5 पिक्चर साइन करके आ रहा है." So I went home smiling. I said, wow, ऐसे ही जीना है. You know what I mean? So pain is there, struggle is there. Make it positive, make it your strength. Use it. Use it. This is your juice, you know. And I just wish you all the best, you know. Wish you all the best. This is a great time. There's internet, there's Instagram, there's people are more open, there's more inclusivity. Casting directors have become big, and there's no wall कि हम TV से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, हम कहीं से नहीं, हम यहीं से हैं, you know. हमें जहाँ मौका मिलेगा, हमें जहाँ अच्छे लोग मिलेंगे, हमारी आवाज़ जहाँ सुनाई देगी, हम वहाँ जाएंगे. You know, you said something wonderful जो मेरी माँ भी हमेशा कहती रहती है कि अगर आप में टैलेंट, मतलब एक आर्टिस्ट में टैलेंट होना ज़रूरी है, या फिर कोई भी काम करो आपको वो काम आना ज़रूरी है, बट आपको शायद कोई हायर कर ले वो काम करने के लिए, बट अगर उनके साथ आप तमीज़ से पेश ना आओ तो आप कितने भी अच्छे हो वो काम पे, वो लोग दोबारा आपको लेके नहीं आएंगे. And that is something that happens the most in the industry as well, in society at large. And I remember, I want to share this because of course एक middle class घर से कोई background नहीं, कुछ नहीं, journalism में कुछ नहीं. My mother had come and I remember कि मम्मी सलमान खान से मैं मिलाने लेके गया था, और सलमान सर ने उनको बोला कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है and all that. और मेरी माँ सुनी, उसके 2 मिनट बाद मेरी माँ ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि सबसे अच्छे से बात करता है क्या? Because for a parent also it is so important that whether you're successful or you're a failure, that never counts to your loved ones. If you're a nice person, that is the legacy that you will leave behind. And I'm going to say this to all of you as well. Sorry that I took an extra minute. But when we speak about Duranga, you know, the first season when it came, I met your co-stars, and of course we had not seen the show that time, and after it released it became like a craze because of the treatment, you know. Thriller is a space that I personally enjoy the most. I'm pretty sure that many people here love thrillers because I think on the web we are making some of the best thrillers, and this is one of them. But you have come in the second season, and this is the first negative role, right? Everybody says, हर एक एक्टर को पूछो तो बोलता है कि मुझे ना वो नेगेटिव रोल या फिर मुझे एक बार नेगेटिव करना है, हर एक एक्टर को. Did you always veer towards something? Did you always want to? Is this the first time that you were offered a negative role because people thought that you are essentially a good guy? That is real life. Let's not mix real life with what we can create, because what we create is from imagination. Secondly, मैं second season में नहीं आ रहा हूँ, मैं second season में उठ रहा हूँ, That's true. जाग रहा हूँ.
और जाके क्या करूँगा वो हमने थोड़ा सा देख लिया है। यार मैं इस तरह नहीं सोचता, मैं नहीं सोचता कि पिक्चर का मैं हीरो हूँ। यू मस्ट हैव सीन एनी इंटरव्यू ऑफ माइन, मैंने कभी मैंने नहीं बोला ये मेरी फिल्म है, मैं इस पिक्चर का लीड हूँ। मैं हमेशा अपनी हर फिल्म को, उसमें अगर मेरा भी इम्पोर्टेंट सबसे मेन किरदार है, उसकी कहानी हमेशा बोलता हूँ ये ensemble कास्ट है। क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कुछ फिल्में हुई, और जब हम लोग ना एक सेकंड में बोलते हैं ये सेकंड है, वो थर्ड है, वो फिफ्थ है, एंड मैंने उसी समय सोच लिया था कि तो मैं इन चीज़ों में पढ़ूंगा नहीं, इन लिस्टों में। और मैं जब किसी दायरे में या एक जगह पहुंचूंगा, मैं अपनी कास्ट को, अपनी फिल्म को हमेशा ensemble कास्ट बोलूँगा, पहली चीज़। सेकेंडली, मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, एंटी हीरो मैं मानता ही नहीं, मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ यार। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, I'm not playing a negative character. There's nobody a negative character. There's no positive character. Everybody is a character. I'm playing a character. Now this character has his complexes. He has his reasons. He has his whole, that's the creation, by the writer, by the world we are in, by the genre we are chasing. I just have become that. And yes, like all of us, we are great fans of Shah Rukh Khan sir's Dar, I mean, Dar, Jack Nicholson, Joaquin Phoenix, Joker. So मैं भी बहुत बड़ा fan हूँ इन फिल्मों का। जब देखता था ऐसी फिल्में, मैं सोचता था यार, it'll be interesting to see when I play a character like this. And I'm fortunate कि मुझे मिला ऐसा character. I'll share something very honest with you. Goldie had offered me this, and I said ठीक है, we'll do. So season 2 तो लिखा भी नहीं गया था, तो ऐसे season 1 में क्या करना है? So he said season 1 में सिर्फ सोना है तुमको। मैंने कहा यार ये तो बड़ा easy होगा, तो मैं सो गया। अब season 2 आया, मेरे को थोड़ा घबराहट होने लग गई, यानी कि क्या लिखेंगे ये लोग, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बनूंगा? So they sent the script to me. I think it was very well written. चारू भाई has done a very good job, and Goldie. मैं बहुत सच्चाई से आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं घबरा गया यार पढ़ के। एंड 2 3 4 5 सेकंड के लिए वो आवाज़ें आई, क्योंकि टिल नाउ आई ऑलवेज प्लेड द प्रोटेक्टर, सेवियर, हमेशा बचपन से, मतलब till the time I've been acting. We're running behind the bad people, and this time It's not even bad. I've always played the protector. I've protected people. I'm a savior. I'm like people. I've done those characters. So 2 सेकंड के लिए वो egoistic आवाज़ आई, and then एकदम से मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है या प्रैक्टिकल ऐसे, एक मिनट, calm down. Those were again characters. Don't take it so seriously. That was a job. This is a job. Are you up for it? You know what I mean? And then I came out of that thought. I said, एक तो मैं protector नहीं हूँ, savior हूँ नहीं. Those were a job. That was a job. That was a character. Let's take this challenge. And I've given it all. I've given it everything. I've had fun. Let's see what happens now. But I still want to ask you this, that like you said, that there are 2 types of people in the industry as well. There are also actors who wouldn't have said yes, knowing that in the first season they are just in coma. Because like you said, the season मैं भी नहीं करता, मुझे पता है था second season में क्या होगा यार। I'm just joking, but yes, I knew the story. It wasn't written, but I knew the screenplay. I knew where the story is going. But like you said that, you've made sure that everything that you do are called ensemble cast because there's everybody there. It also speaks of a sense of security, right? मतलब एक secure इंसान ही ऐसे कर सकता है. And sometimes people can, when you work with people, like I said, there are 2 types of people. So you do work with people who can get insecure at times. Like you said that there have been people where they've been slotted at number 1, number 2, number 3. How did you deal with that situation? I feel if you are getting insecure with me, it's my problem. So I should help you not get insecure with me. So when I do a movie with my cast and people, I've done a beautiful movie right now called Pune Highway with Jim. I think he's phenomenal. I blush when I watch him. He's just such a beautiful artist and a beautiful human being. And Anubhav, and I just chat with them. ऐसी हमारी film है. So इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, भूल जाते हैं. Let's work for each other.
Let's make this an incredible experience for each other. So insecurity अगर किसी को हो रही तो आप जाओ उसके कंधे पे हाथ डालो कहो यार चाय पियो हम लोग बराबर हैं and let's have fun. So you got to break the ice, man. You know, this is not a 100-meter relay. Like this is not a solo. What do you call sport? You know, it's with people, and you got to bring people together. And I feel when that energy is created, something special comes out. You know, and then you'll always find one or two people who always say ये मेरी है, ये मेरा है, मेरी vanity है, मेरा है. उनको भी थोड़ा माफ कर देना चाहिए, वो सुधर जाएंगे वो लोग. बट आपको लगता है कि वेब के आने के बाद OTT का जो एकदम रौनसा हुआ है उसके बाद आर्टिस्ट लाइक यू आर गेटिंग बेटर रोल्स, बेटर रिटन कैरेक्टर्स टू प्ले ऑन स्क्रीन? यार मैं ये कंप्लीट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैड मूवीज लाइक कायपोचे, गोल्ड, सुल्तान, रागदेश. So I've been very blessed, but I do understand what you're saying. OTT takes the exhibition and the distribution aspect of making movies. So 52 weeks, you know, even if you make like 2 movies every week, you can't make more than 100. But when you have so many OTTs, you can make more stories, and then you're not bullied by the business aptitude. But today on OTT, I mean, everything is coming, big films, small films. I mean, there's nothing big and small, but of every radius, because there's an audience for everything. So yeah, more reach. It's also helped, I think, in the inclusivity. The world has become, like the world has shrunk. You know, we are watching Korean shows. You know, in America, people are watching our series. So it's like a good exhibition of exchange of content and films and stories. It's a good. We are really in good times right now. You know, Duranga 1 was shot in real locations. Is Duranga 2 also in that space, and how difficult was it for you to like, or how easy was it for you to shoot at real locations? Yeah, I won't say it was difficult. I won't say it was easy. It's my job, you know. काश मैं बोल सकता, क्रिकेट में बोल सकते ना आज पिच बहुत स्लो थी, you know, या बॉल बहुत टर्न कर रही थी. I would say it was a fun journey for me. It was fun playing this character and being with this team. It's a very incredible team, and yeah. I will actually open the floor for a few questions, and in between, whenever I will have question, I'll also come back to you. But otherwise, मुझे बहुत जूते और चप्पलें पड़ने वाली है, क्योंकि अगर इनको मौका नहीं दिया आज, तो मुझे सच में गालियाँ पड़ेंगी. तो please raise your hand, and then we'll send. Okay, we'll. Hey, hi. How are you, Palash? Good, Amit. I love your jacket. Thank you so much. I just want to say before Palash says anything, Palash, जब मैं struggle करता था, he used to find me auditions. He was one of the kindest people I've met, you know, when I started my journey. So, Amit, good to see you. And hi. So, well, when I met Amit for the first time, it was 20 years back, 20 साल पहले की बात है. अमित का पहला शो था क्यों होता है प्यार, स्टार प्लस में, और मेरा डेली सोप में पहला कदम था. मैंने हाँ मेरा पहला कदम था डेली सोप्स में. वैसे मैंने 1994 में शुरुआत की थी एज अ मॉडल, और 1996 में 28 साल पहले कास्टिंग का काम शुरू किया था. सो अमित, back then it was a very iconic show, क्यों होता है प्यार. It was one of the cult shows, one of the best shows, and Amit was so remarkably good in that show as an actor. I was playing a nerdy, geeky character, and he was playing the lead. In those days, we were called lead actors and lead heroines. So, cut to Amit transitioned from television to, he moved to New York. And I remember how he used to call me from New York, very lost and very troubled. And you took off to New York and you did this, I believe, New York Film Academy, right? Lee Strasberg. And that time we used to have landline numbers. There was no mobile numbers. Amit used to call me from New York, troubled. He's like, Palash, I'm here in New York. आने के बाद क्या करूँ, क्या नहीं करूँ. तो वो सारी memories, सारे flashback में, you know, घूम रही है दिमाग में अभी. But my point here is,
Amit, from there cut to Kaipoche, your remarkable journey from a television actor to honing your craft and taking a break from the Indian television industry and moving to New York and pursuing a filmmaking course, redefining your craft. I mean, hats off to you, kudos to you. And I have seen your journey from then till now. And as you correctly pointed out कि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है और वो we struck a chord because somewhere our roots are grounded. हम जहाँ पे भी है अभी तक पर roots grounded है, हमारे जो ज़मीर है वो अभी भी intact है, वो रखना ज़रूरी है. That's my point. And secondly, Amit, my question here is, now since you have transitioned to OTT and films, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा था, आई थिंक 2-4 महीने पहले, एंड दिस इज टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड एन एस्पिरेंट लाइक मी हु स्टिल मेकिंग इनरोड्स इन द इंडस्ट्री एज एन एक्टर. सो ये है बिकॉज द लाइन्स हैव ब्लर्ड एज यू वेरी वेल नो. द क्वेश्चन हियर इज now because it's become a mandate in the US that you have to have actors with every ethnicity, diversity. You have to cast an Asian actor, a Korean actor, a Chinese actor, you know, a multiple diverse actor. It's a mandate. ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड OTT में भी शुरू हो रहा है. There are a lot of North Eastern actors being cast, and here I'm talking from a casting perspective. So how important it is for an actor, and you're doing a fantastic balancing job. Let me tell you guys that many people out here don't know. Amit is also shuttling between LA and Bombay and balancing act of this working in the West and in Bollywood and doing a remarkable job in that. So the question here is ki if an opportunity arises, तो like see of course we know उस ज़माने में एक ओम पुरी सर हुआ करते थे, काबिर बेदी सर थे, फिर कुछ चुनिंदा एक्टर्स थे, राइट ना, इरफान खान सर. अभी द प्लेटोरिया has opened up, the doors have opened up, right? And one Priyanka Chopra is in the mainstream, in the main league. But for character artists like me, for instance, and for actors out here, how important it is to move base there, or how important it is to, you know, move this, I mean, do this balancing act, which you have been very well doing. First of all, thank you, and sit, please. But actually, lovely question. First of all, this is a memory test. There is no transitions. You know, transition नहीं है कि पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए. There's no transition between art. You just keep creating. The avenues change depending on the story, depending on the audience, depending on, you know. I just did a short film, 30-minute short film. People are loving it. It's a story, great story, well made. I think from the key actually is to keep working. You know, I mean, जहाँ काम मिल रहा है, वहाँ शुरू करो. You know, you have to start. I think sometimes we start romanticizing the whole thing. You know, and like you said, like character artists. There's nothing called character artist. You're an artist. Don't call yourself a character artist. You know, there are some people who've undermined this thing. They've been in the system to put us in blocks. Let's defeat that. There's nothing called character artist. Secondly, like you said, the walls are blurred. I think they are broken. And it's time that the world is seeing India shine. They're seeing the power, the resilience, the character we have, which we have been gifted by our forefathers, by our traditions, by our history. You know, that makes us special. The compassion we have, the empathy that we share makes us special. And the stories that we have from our soil, from our cities, of our lives. It's time we got to make them into stories, and I think the world will watch. In terms of what you want to do and where you want to be, it's up to you, man. Everybody, anybody, me, you. जो मन में आ रहा है, जहाँ जाना है, जाओ करो. बट कुछ करो. बैठ के ये सब मत बनाओ कि ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँगा, फिर मैं वो. I just feel, and I felt this, and I want to share this with you. When I was like back there, 10 years back, यार इसी में ही फंस गए सब. I think a lot of people didn't get jobs or did not reach where they could have reached because they were just stuck.
सब इसी में अटक गए, मैं फर्स्ट हूँ, मैं सेकंड हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा रोल नहीं करूँगा, मैं वैसा रोल नहीं करूँगा. You got to jump in the swimming pool, man. Just jump. That's how did you learn swimming? I learned like that. मेरे सीनियर ने मुझे धक्का दे दिया तो मैंने स्विमिंग करना सीख लिया. 80% of people that you meet, they say they learned swimming like this. But before entering the pool, you will say नहीं यार ये लैप अच्छा नहीं है, नहीं ये स्विमिंग पूल में कीड़े पड़ रहे, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. अब you got to jump, man. Just go do you. Listen to you. Sometimes हम लोग दुनिया के तरीके, इंडस्ट्री के तरीके, चीज़ों के तरीकों में खो जाते हैं. I think ignore the world, ignore what is outside, go in. All the answers are in. Everything is you. You are your own father, your godfather. You are everything. Look deep, you have the answer. Thank you, bro. Hello. Hi, my name is Vibhuti and I am from Natya Kiran Manch Theatre Group. I just had a question for you on the art that you were just talking about. So when you are doing TV vis-a-vis when you're doing OTT, so TV is more about the real kind of characters. It's like the larger than life and more drama. Whereas OTT is very real, the real characters, and it's very raw, and the audiences are different. So TV is nowadays at least targeting the tier 2, tier 3, cities, whereas OTT is targeting the more metro audiences and even the world audiences. So as a character that you played on TV, and I remember that show of yours because I had seen it, and you were that cute chocolate boy there. And vis-a-vis what we just saw, it was a very raw, real character. So don't you think when you are acting in these two mediums, your art is going to be a little different in your style of acting? I mean, because, I don't know, I was a little apprehensive about doing TV, frankly, for the simple reason that I thought that it would require a little bit more drama. Though theatre also is drama, but theatre is very real. It's again very raw. So, I mean, how would you kind of, with your experiences, which has been, all across, how would you kind of... Thank you for your question, Vibhuti, and nice to meet you. Please sit. Like I said, first of all, what you saw was 20 years back. So the evolution is not in the medium, the evolution is in the person and the writing. So what you see, what I'm doing now is just not me. Right? It's also what the material that has been written. I think we have transported in a far more better dimension than where we were. We are exploring different genres, different kind of stories. We are allowing different kind of actors from different kind of places to come and show up. So. To be honest, ये जो सवाल है ना मैं कहाँ एक्टिंग करूँ, like अगर मुझे 6 महीने या 1 साल, you start looking for good stories, start looking for good work. Where it is, it doesn't matter. Start somewhere. When I left television, I didn't leave TV. I was very disturbed. I was not in a good frame of mind. And then somebody very close to me said, you got to sort yourself. And I realized, I said, yeah, I know I need to sort myself. So I just took a break. And मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वापस आया और फिर लोगों से मिलना शुरू किया. उसमें कुछ लोग थे, उनको लगा यार अमित बदल रहा है यार, ये गुस्सा नहीं करता, अभी लड़ता नहीं है, थोड़ा हम्बल भी लग रहा है ना, चलो इसको एक ऑडिशन दे देते हैं. तो मैंने ऑडिशन दे दिया. They liked my face, they gave me the part. My life started again. Then I started. मुझे लगता है लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है और इतना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते. Let's go work. If you are getting a good part on television, नहीं करो, मुझे दे दो, मैं कर लूँगा यार. काम करो यार. Work. And thank you. I think Amit has to leave, guys. No, So let's do. we can. Okay. Yes. Okay. Okay, two more. Baap re. Okay.
Yeah, we'll do it quickly. Yes, tell me. माइक दीजिए उनको. जी. ठीक है, 2 सेकंड. हेलो. We'll do it. We'll do quickly few. 5 minutes. मैं सुरेश शर्मा, जर्नलिस्ट. नमस्ते सर. नमस्कार. सर मैं थोड़ा अलग तरह का सवाल कर रहा हूँ और बिल्कुल. थोड़ा इसमें सब लोग जानेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि आप अपने छात्र जीवन में अपने जीवन को बार बार ख़त्म क्यों करना चाहते थे, समाप्त क्यों करना चाहते थे और उससे कैसे आपने विजय हासिल की? बेवकूफ़ था सर, नादान था, पता नहीं था कि दुनिया इतनी अच्छी है. Yeah, ask. Give him the mic, please. And we'll come to you also. हाय सर, केशव है. Hi, जल्दी जल्दी सवाल पूछना. Hi, सब hi. तभी सबको मौका मिलेगा. That's what I'm saying. नाम तो ले लें दो. हाँ ना नाम दो ना. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, एज एन एक्टर सर आपकी प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, क्या एक्सरसाइज करते थे आप अपनी स्ट्रगल के टाइम पे, और सर क्या वो आप अभी भी करते हैं, और सर वैसे एक लास्ट की क्या रूटीन होना चाहिए सर एज एन एक्टर? एक तो मुझे लगता है यार, ये पता नहीं क्यों तुम लोग सबको, मुझको भी लगता था, तो मैं एक्चुअली आपको क्यों बोलूँ, ये जिम को और एक्टिंग को प्लीज़ मिक्स मत करो यार. हाँ, और एक्सरसाइजेस और ये सब. मैं यार डबिंग करने जाता हूँ, है ना, और जाके डब करता हूँ, लाइन दी हुई है. आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ. आपको पता है जानवर एक्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा है एनिमल्स की, है ना, रेल आते हैं, उनका मास्टर बोलता है करके चले जाते हैं. आपने बच्चों को एक्टिंग करते हुए देखा है? आपने बच्चों को गाना गाते हुए देखा है, पेंटिंग करते हुए देखा है? कितनी सरलता है. उनको बोलो अच्छा ये करना. मैंने एक फिल्म की थी एक छोटे बच्चे की तरह. मैं पूरा दिन प्रिपेयर कर रहा था, रात को सोया नहीं, ये सब आंखें लाल वाल करके ऐसे ऐसे करके आया. मैंने बोला रिहर्सल करनी है. वो मेरे बेटे का रोल कर रहा था, बट ये बिहेव लाइक माई बाप. तो मैंने कहा रिहर्सल करेगा? नहीं. मैंने डायरेक्टर से कहा ठीक है. टफ सीन है, उस सीन में मैं उसको फांसी, अपने बेटे को फांसी लगा रहा हूँ. बैरट हाउस में एक सीन है. So I said, मैं उसको बना रहा. I said, you know, it's a tough scene. He said, no, I'm okay. We'll do it. We did the scene. He was so beautiful in the scene, and I learned so much. You know, I mean, so do your work. I'm not saying don't do your work. Find your process. It'll become better. You'll align. But it's very simple. You've got the line. तो वो हम लोग ना अपने आप, हमारी आदत है यार स्ट्रगल करने की. मेरी आदत थी, हम सबकी आदत है चीज़ों को मुश्किल करना. चीज़ें मुश्किल नहीं है. हेलो सर. हेलो नयन सर. हेलो अमित सर. हाय बाय. सर एक्चुअली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूबरू. मुझे हो रहा है. तो सर एक्चुअली मेरा सवाल सेम है और शायद इसका जवाब काफ़ी बड़ा हो. तो मुझे आपसे यही पूछना था, जैसे आपने कहा लास्ट टाइम कि जैसे आपने आज तक प्रोटेक्टर का रोल प्ले किया और अभी आप थोड़ा सा नेगेटिव प्ले कर रहे हैं दुरंगा 2 में. तो शायद इसका जवाब काफ़ी बड़ा हो. तो आपको शिफ्ट करने के लिए आप एक होमवर्क कौन सा करते हो जो आपको लगता है कि सब प्रैक्टिसेस में या फिर मैं जो होमवर्क करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो ये एक एक्टर ने करना चाहिए? आपका नाम भूल गया यार. वेंकटेश अयाचित. वेंकटेश अगर मुझसे 5 साल पहले ये बात पूछते तो मैं बोलता मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं मेथड एक्टर हूँ, मैं यहाँ गया वहाँ गया, वो सीखा, 4 रात नहीं सोई, ये किताबें पढ़ी, वो पढ़ा, ये खड़ा, बहुत बड़ी बात बोलता. मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है भाई, राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं, यू नो, दे राइट, दे स्पेंड इयर्स ऑन क्रिएटिंग समथिंग एंड दे गिव यू द लाइन्स. यू जस्ट हैव टू रीड द लाइन्स एंड बी इट. You know, so it's very simple. That same thing I'm just saying, don't unnecessarily complicate things. And मैं कहता हूँ लाइफ को अनकॉम्प्लेक्स करो, खुद को अनकॉम्प्लिकेट करो, आपका प्रोसेस भी अनकॉम्प्लिकेट हो जाएगा. एंड अगेन मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, यू नो. और आई हैव गॉन ऑल आउट इन द डायमेंशंस, द राइटिंग, द स्टोरी, द डायरेक्टर, the collective decision we had कि ये character को कहाँ लेके जाना है. And you just go, you just jump and you go on a ride and you know. So मुझे ऐसा लगता है आप कभी आप बच्चों की फिल्में देखना या बच्चों के साथ कभी ऐड करना या बच्चों के साथ एक्टिंग करना, they are the best acting teachers in the world. Animal study करना, आप जानवरों को देखो, you know. Plus, it's an evolving process. Keep thinking, keep reading, keep talking. Just live life and you'll find the answers there.
You know, I'm still as lost as you are. So. Okay, last. Okay, second Hi, last. good afternoon. Hi. I'm really feeling privileged that I'm speaking to you. Actually, I am an upcoming actor, but I started my career at around now 62. Can we have a round of applause for ma'am, please? But I really have a dream of becoming a very good actress. You will. Yes, so my question to you was that you must be working with actors of my age in every, wherever you are working in OTT or serials or movies. So do you have any special message for actors at our age who are trying to start their career, which can be really of some help to us, to how to come up? May I know your Because- name, ma'am? Yeah, I'm Geeta Dave. Okay, Geeta ma'am, first of all, it's my privilege knowing you. Thank you for your question. Please have a seat. Yeah. And you want to act, right? Go act. Go act, it'll happen. आपकी इच्छा है ना, आपका मन है, जाइए कीजिए, आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता. Yes, ma'am. Hi, I'm Ravira, and first of all, sir, I love your work and Breathe Into the Shadows. I want to ask about acting. I want to know, as a person, when you're sharing the screen space, like people like Abhishek, whom you like saw on screen as like big stars, and you overshadowed them, according to me, in that series. How do you feel as a soul inside? You know, like the kid inside you. Wow, that I made it, or do you think it's a long journey ahead? यार मैं ना अपने आप को बड़ा करता हूँ ना मैं अपने आप को छोटा करता हूँ. मेरा लाइफ में हसूल है ना खुद कि आपको अपने आप को ना बड़ा करो ना अपने आप को छोटा करो. अपने आप इतना समझो कि तुम खुद के लिए काफ़ी हो, और जिस दिन तुम खुद को काफ़ी समझोगे सामने वाले की निंदा भी नहीं करोगे ना सामने वाले को भगवान बनाओगे. Correct. Great. Thank you for your last question. Thank you guys for being a wonderful audience. But before we let him go, we have a gift for you, Amit. And thank you for this wonderful your conversation. मेरे फेवरेट वर्ड हैं, घबराना नहीं है, झुकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. Go get what's yours. And we also have. Sir, look here. Sir. Come on. Stand. We need more color. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. I'm sorry. Understand. अभी क्या है यहाँ पे? What do we have here? Can I have this glass of water? Can I have this glass of water? Obviously. Take the warm wala na. Tell me something. अभी क्या है? Movie. यहाँ पे कितने बजे? अभी 2:30. कितना बजा है? तू जा रही है? मेरी छुट्टी है, मैं सिर्फ इसके लिए मैं घर जा रही हूँ. कहाँ? I'm so upset.